Okay, so we are live. वन पीस का लेटेस्ट चैप्टर रिलीज हो गया है और जैसे कि रात के 1 बज गए, पर जब वन पीस रिलीज होता है तब मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। और बस इच्छा थी मेरी कि अब से लेके वन पीस के एंड तक जो भी मेरी जर्नी है, वन पीस में कुछ 10 साल से पढ़ रहा हूँ, 5-6 साल से मैं वीक टू वीक पढ़ रहा हूँ। पर अब वन पीस की स्टोरी इस मकाम पर पहुंच गई है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरी रिएक्शंस होगी या जो कुछ मुझे लगता है स्टोरी के बारे में, उसका एक डॉक्यूमेंटेशन हो, इसलिए बस मैं शुरू कर रहा हूँ। सो वन पीस का चैप्टर रिलीज हो गया है। बस एक ब्रीफ समरी देने के लिए, चैप्टर में हमने लोकी का फ्लैशबैक देखा और बहुत खतरनाक रिवील देखा। एक्चुअली जो लास्ट चैप्टर में जो रॉक्स का रिवील हुआ है, उसकी वजह से ही मैंने सोचा कर ही लेते हैं लाइव स्ट्रीम। सो वन पीस का चैप्टर 1155 मोबाइल पे मैंने खोला है और लेट्स स्टार्ट रीडिंग। सो देखते हैं। चैप्टर का नाम है द रॉक्स पायरेट्स। लोकी, this is Elbaf, but Pops ain't here. He is on a voyage. Okay, so Harald नहीं है वहाँ पे. Okay, you're all puny humans. This is the first I've ever seen one moving around for real. Okay, so Whitebeard, Shiki, Stressy और Rox Dizebek बात कर रहे हैं लोकी के साथ। लोकी की साइज कितनी बड़ी है भाई, क्या है। Okay, I'm guessing he can still be reached even if he's away, right? What's your name? Loki. All right, Loki. Just do what I tell you. Head on home and get someone to send urgent word to your pops. Tell them to say Loki has been seriously hurt. You've got to return to Elbaf at once. Watch your mouth. Do I look like I take orders from a human? Loki or rocks. You seriously expect my father to drop everything just because I'm hurt? Just because I'm hurt? Yeah, right. Besides, someone as weak looking. क्या बंदा है बे रॉक्स, लोकी को वीक लुकिंग बोल रहे साहब। एज वीक लुकिंग एज यू हैज नो राइट टू बॉस मी अराउंड। Rox's wordsmanship was renowned for its brutal impact, akin to a giant hammer on a cannon or a cannon fire. One Piece standards से बहुत ही ordinary है. It was said to blow everything in the surrounding vicinity away. तो बच्चे को मार रहा है, चाइल्ड अब्यूज चल रहा है इधर। वाह हा हा, वाह हा 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 हा। ओके, सो रॉक्स का लाफिंग स्टाइल वो हा है। मुझे जेहा चाहिए था, एक ब्लैकबर्ड का बाप है तो शायद से, पर वो हा, देयर वी हैव इट। लोकी हैज बीन सीरियसली हर्ट। बिना किसी कारण के एक बच्चे को मारा। एक ब्लैकबर्ड्स का ही बाप है तो क्या ब्लैकबर्ड का ही बाप है? नॉट सरप्राइजिंग। Harald's path crossed with this madman once before. Reverie? ईमू, मैंने ईमू को देखा इधर। It happened during the reverie that year. Someone attacked and kidnapped 5 of the kings. Someone attacked and kidnapped 5 of the kings. Roxy होगा। Unbelievable. That big man in black has to be the culprit.
The life of those sovereigns cannot be used to extort me. The lives of those sovereigns cannot be used to extort me. So, so मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि जो ये 5 किडनैपिंग हुई है वो रॉक्स ने की है, और ईमू को एक्सटॉर्ट करने के लिए उसने ये की होगी। ईमू को कम से कम लग तो ये रहा है कि रॉक्स ने, मेरा स्पेकुलेशन है कि रॉक्स ने उसको कुछ तो मतलब कुछ डिमांड करने के लिए किया होगा। पर भाई ईमू ने पूरा का पूरा आइलैंड उड़ा दिया है, 5 किंग को ये हो तो क्या उसको फर्क पड़ने वाला है। नो किडिंग, बट इट थ्रू द होली लैंड इनटू केओस। ये तो गॉड नाइट्स है शायद, ये दो नए गॉड नाइट्स का इंट्रोडक्शन हुआ शायद इधर। द इंसिडेंट वुड बी द फर्स्ट एंड लास्ट ऑफ इट्स काइंड. An intruder made it all the way to the flower room, hidden deep within the Holy Land. The man claimed to be a Davy Jonesian pirate. डेवी जोन्स का लॉकर जो लॉन्ग रन में मेंशन किया था. The man claimed to be a Davy Jonesian pirate. He knew there was nothing more he could do in that moment, so he withdrew with these words. Davy Jonesian. कौन है ये? और ये लड़की कौन है? ये जो शायद ये एक नई गॉड नाइट लग रही है, और ये जो है पैनल में जो से बैठा है हाथ में बंदूक लेके, वो डेवी जोन्सियन पायरेट. डेवी जोन्सियन पायरेट. ओके, वो रॉक्स ही है. यस, ओके, ऑब्वियसली वो रॉक्स है. सो द मैन क्लेम टू बी अ डेवी जोन्सियन पायरेट, मतलब रॉक्स क्लेम्स टू बी अ डेवी जोन्सियन पायरेट. मुझे मुझे कुछ आइडिया नहीं है इसका मतलब क्या है, पर आई नो डेवी जोन्स. लॉन्ग रन में फॉक्सी ने मेंशन किया था उसके बारे में. जस्ट वेट वन डे आई विल बी बैक. रॉक्स ईमू को कह रहा है, ये रॉक्स ईमू को कह रहा है. सो रॉक्स एंड ईमू का कन्फ्रंटेशन इस रेवरी में हुआ है, जिस रेवरी में इसने एक नेवी एडमिरल को मार डाला. Just wait one day I will be back. Naturally this incident would never be brought to light, obviously. Ironically, on that very day there was another intruder in that land. Okay, look, it's so much bigger than a normal giant. I Celestial dragons. I want it as a slave. No, we should kill it and have it stuffed. सीरीज के खत्म होने तक इनमें से मेरे को कम से कम 10 लोगों की मेरे को लाशें चाहिए, लाशें. एक नंबर के हरामखोर लोग हैं. Look, it's so much bigger than a normal giant. I want it as a slave. We should kill it and have it stuffed. Guards, protect the nobles. Hot, hot, hot. I'm sorry, the negotiations. Harold को आग लग गई है. I know trespassing is a crime, but isn't all this going a bit too far? Trespassing के लिए इसको आग लगा दी है. ठीक है, trespassing is a bad crime, पर आग क्यों लगा रहे हो उसको यार? Don't let the king napper get away. किंग्स को किडनैप किया तो किंग नैपर.
An admiral was murdered. The culprit ran towards the castle. Proceed with caution. Okay, so Harold ran towards the castle. और रॉक्स, ये रॉक्स रॉक्स बाहर आ रहा है. सो रॉक्स और हरल्ड मिल यहाँ मिलने वाले हैं, गेस. इट्स जस्ट वन थिंग आफ्टर द अदर. सीज दैट बिग वन. That must be the guy who kidnapped the kings. How dare he use me as a scapegoat? I will show him. The giant in the Holy Land. The giant in the Holy Land? Don't your king lurk in the boonies? So Harold or Rocks? Conquerors hockey clash? The clash between the two strangers blew everyone within a 5 kilometer radius. Blew away everyone within a 5 kilometer radius. Whoa, ha, ha, state your name. Bara, ha, 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 ha. It's Harold. I am Rocks. Angle your next strike towards the town. They will enslave you if you get caught. So Rocks ने Harold को protect किया इधर. Angle your next strike towards the town. They will enslave you if you get caught. Okay? Now, लास्ट टाइम रॉक्स क्यों याद रहा है हेरोल्ड को और दोस्त क्यों बना, एक्सप्लेनेशन इधर मिल गया. They will enslave you if you get caught. Okay, don't ask these questions. So obviously Harold को कुछ पता नहीं है. How do I get to Elbaf? The new world is that way. If you survive this, let's meet again, Harold. So Rocks saved Harold here. Don't be ridiculous, as if I would ever associate with a criminal like you. Are you seriously just gonna jump off the edge? Jump off the edge. The Rocks had taken down a Navy admiral just moments earlier. Despite all the efforts to save him, the admiral did not survive. It was deemed the most grievous of sins. In the blink of an eye, Rox's infamy boomed. The event sent a powerful shock throughout the seas. Sometime later, a ship carrying a great amount of celestial tribute to Merijua was attacked. The gates of justice were destroyed, and the attacker fled the scene. The stolen funds were later used to support Rox's pirate activities. Obviously, government को खुन्नस तो होगी इससे. Until that point, Rox had always acted against the world government, but after that he started to target pirates as well. Pirates too. In the world of pirates, there exists a long-standing tradition known as the Davy Back fight. In the world of pirates, there exists a long-standing tradition known as a Davy Back fight. Pirate crews would compete in a series of matches, wagering their flags or even their crewmates in a ruthless game. Rocks used this tradition to build his entire crew. They've got an amazing guy. You lose it when you see him. So उसके शिप पे यहाँ पे स्टसी और शिकी दिख रहे हैं. Rocks used this tradition to build his entire crew. They had won many scoundrels to their side before they even had a flag. That's it.
कि सो व्हाइट बियर्ड स्टसी ये सब उसने डेवी बैक फाइट में जीते हैं लोग। तो रॉक्स का ऑरा देख के फॉलो नहीं करते ये लोग उसकी। रॉक्स का ऑरा देख के फॉलो नहीं कर रहे थे ये लोग। रॉक्स ने डेवी बैक फाइट में जीता है लोग को। व्हाइट बियर्ड किसके क्रू में था पहले फिर? आफ्टर दैट they've made their way to Elbaf. Elbaf West Castle. Oh no, I rushed home as fast as I could. But I'm glad you've already turned the corner on your recovery. Thank goodness. I know that you're strong, Loki, but you shouldn't wander into the realm of the dead. You got lucky escaping with nothing more than that after falling off that cliff. There's plenty more danger just lurking deeper inside. Dad really came back. It has to be a coincidence he couldn't have come for me. यार लोकी की क्या हालत कर दी रहे हैं। Dad really came back. It has to be a coincidence. He couldn't have come for me. Yes. Rocks. I've heard all about your crimes. What are you doing here? I missed you, Harold. You gotta join my crew. The world government won't hear you out, right? You get it now? The time has come. इस पेज पे कौन कौन है? ये रॉक्स है, शीकी, व्हाइट बियर्ड, स्टसी, और ये तीन अलग ही कोई तो लोग हैं ये तीन। शायद इनमें से कोई कैप्टन जॉन होगा या वैंगशी होगा। I don't know. Don't be stupid. If I anchor myself with a thug like you, I will lose all the goodwill I've built up with my allies. Good point. What of it? Aren't those allies government pawns? Good point. What's the point? What's the point of reaching for something that's impossible? You've got to level the playing field. Don't be a wet blanket, Harold. Elbaf has the greatest warriors in the world. If something churns your stomach, you should just crush it. सो इन दोनों के जो डिफरिंग पॉइंट ऑफ व्यूज़ है वो यहाँ पे हमको दिख रहे हैं। हेराल्ड डिप्लोमेटिक बहुत सोच रहा है कि हम अलाई करेंगे वगैरह सब, और रॉक्स कह रहा है कि बस फक द गवर्नमेंट। दैट्स द ओल्ड वे, एल्बाफ हैज़ नाउ चेंज। ऑब्वियसली हेराल्ड ने उसकी आइडियोलॉजी बदल दी। पीपल पीपल नेवर चेंज। The same bloodlust, it's still pulsing through you. Hey, can't you two just enjoy the meal? You guys should know that if you follow a man like him, you will only be led to ruin. Cheeky. Following that moron? Don't make me laugh. We are all completely out for ourselves. None of us would bat an eye if Rocks died. Honestly, a crew built on mistrust. Well, that's not so. Well, that's not to say his plans don't have a certain appeal. They could prove very lucrative. Have you heard of Hachinosu? The place they call the Isle of Exiles or even Pirate Island. Countries all around the world send their worst inmates as a form of penal exile. Countries all around the world send their worst inmates as a form of a penal exile. So Pirate Island is Australia. Shiki the Wicked, future golden land.
Miss Bucking the tech bandit, the tech bandit. So मोबाइल फोन चोरी करती है बकिंगहैम स्टसी. डॉन मार्लॉन, डॉन मार्लॉन, ओके, डॉन मार्लॉन, नया कैरेक्टर डॉन मार्लॉन, गैंगस्टर फ्रॉम द वेस्ट ब्लू. नया कैरेक्टर है शायद से, या फिर किसी कवर स्टोरी में इंट्रोड्यूस किया होगा 400-500 चैप्टर पहले. डॉन मार्लॉन. फर्स्ट इम्प्रेशंस इसका सिगार देख के और ये डॉन है देख के, मे बी कपोन गैंग बेज का ये कोई होगा रिलेटिव वगैरह. ओके, ओह, इन दोनों के नाम भी दिखे. it it was meant to be a barren island with no food, where all you could do was wait for death. हाचिनोसु के बारे में बात हो रही है. But last year the survivors started banding together. And why do you think that happened? Believe it or not, the island had a massive gold deposit. A shadowy organization found out and got involved. They helped the criminals amass a fortune that really pissed off the government. Edward Newgate, Edward Newgate, future Whitebeard. Pirate Prophet Ochoku, Ochoku, oh, ये वैंगजी है इसका, हाँ, ओके. Pirate Prophet Ochoku, the future Commodore of Pirate Island. इसको ही डिफीट करके ब्लैकबियर्ड ने हाशिनोसु की कमांड ली थी. Believe it or not, the island is Ganzui, Ganzui the smuggler. So डॉन मार्लॉन और गांजुई, ये दो न्यू कैरेक्टर्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुए हैं. व्हाइट बियर्ड शीके के साथ इंट्रोड्यूस हुए, इसका मतलब कुछ तो होंगे ये लोग. गांजुई द स्मगलर. Okay. These days, anyone who gets near the island gets swarmed by the hardened criminals. They will strip you of everything. So then we cut a deal with the government. I asked, how much are you going to pay us if we take that island back for you guys? Once we get the money, we'll take down the pirate island and split the mountain load of loot between us. But there's no way in hell we are just handing over the island and those criminals after that get it. But there's no way we are just handing over the island and those criminals after that get it. I will take charge of Hachinosu, and with these dumbasses under me, we will turn it into a pirate paradise. I can already see the government and marines standing there like clueless dogs. This is just the prologue of my life. This is just a prologue of my life. Using that island as my base, I will crush the navy, bring the Holy Land crashing down, and after that, I'm going to be the king of the world. और लोकी ये सब चुपके से सुन रहा है. Your enemies are too big. You're picking a fight with the whole planet. Say what you want. One day someone's bound to pull it off. There is no such thing as power that lasts forever. Join me, Harald. If we team up, we will be unstoppable. और फिर से लोकी ये सब सुन रहा है. चैप्टर अब तक खत्म नहीं हुआ यार. चैप्टर अब तक खत्म नहीं हुआ है. सो लूफी क्या बोल रहा हूँ मैं, लोकी लोकी ये सब सुनकर हंस रहा है. Quit inviting me. I told you I am the king. That doesn't matter. The world. I am going to claim it. The whole damn world. और एग हेड में जब वैन ऑगर और
कैथरीना देवान जब एगेड में आए थे और सैटर्न का जब उसने इमिटेट करने के लिए उसने सैटर्न को टच किया था, और जब उसको पूछा गया था वो दोनों को कि व्हाट डज ब्लैक बियर्ड वांट, दोनों ने कहा था द वर्ल्ड। जैसा बाप वैसा बेटा। लोकी सडनली रियलाइज दैट ही हैड फाउंड salvation. So लोकी का जो अभी का जो माइंडसेट है, इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस नाउ. Loki suddenly realized that he had found salvation. 4 years passed. Harald continued rejecting the numerous invitations he received until one day Rox's plan had finally reached its fruition. Backed by his monstrous crew, he would send shockwaves throughout the world. Set sail, you bastards! One Piece, chapter 1155, end. Break next week. चलो सो बहुत कुछ हुआ इस चैप्टर में. इस इसको प्रोसेस करने को बहुत टाइम लगेगा. अच्छा हुआ एक्चुअली ब्रेक है नेक्स्ट वीक में. भाई चैप्टर 908 या 907 था जब रॉक्स का नेम ड्रॉप हुआ था, और चैप्टर 957 में शायद हमको ये समझ, हाँ, हमको बताया गया था कि रॉक्स पायरेट्स करके एक क्रू था जहाँ पे जिस क्रू में वाइट बियर्ड और ये सब लोग थे. फाइनली 5-6 साल बाद रॉक्स एज अ कैरेक्टर वन पीस में आ रहा है. सो मेरे इनिशियल थॉट्स है कि बहुत ज़बरदस्त चैप्टर था ये. नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हुए थे, रॉक्स के मोटिवेशन, लोकी के बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी मिली, ईमू और रॉक्स फेस टू फेस इस चैप्टर में देखने को मिले हमको. इनक्रेडिबल. ओके, सो वंस अगेन अमेजिंग चैप्टर. अब जब नेक्स्ट चैप्टर आएगा तो फिर से लाइव आऊंगा मैं. तब तक के लिए बाय.